Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Welcome everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying healthy, staying happy, and rooting for Sushant Singh Rajput. एक छोटा सा अपडेट जो आया एंड जो बहुत ही अच्छा अपडेट है यू नो इवन दो वी शुड ऑल क्या कहते हैं थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड पे रखना चाहिए बट स्टिल हमने पहले भी किया हुआ है जब भी देर इज एनी काइंड ऑफ गुड न्यूज़ गुड अपडेट वी शुड डेफिनेटली spread the word and also cheer spread some cheer as well क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये डायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में and I'm gonna be very clear Sushant Singh Rajput murder case there is no Sushant Singh Rajput drug case तो है Rhea Chakraborty drug case the peddler the consumer Rhea Chakraborty ये उसका केस है ड्रग का now we should also feel good that NCB जिसके बारे में बहुत कई दिनों से बातें भी हो रही हैं and there was some kind of questions raised on NCB and its operation finally yes hello finally NCB has I think done the right thing मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा कुछ बात करेंगे but let me just read out what the statement was. NCB claims, and it's in black and white right now. It's all documented. NCB claims Rhea Chakraborty, her brother Shavik Chakraborty, brought drugs for late actor Sushant Singh Rajput. So जो draft file हुआ था by the NCB, उसके अंदर the drug case is linked to the death of Sushant Singh Rajput. This is what the central agencies have filed. आपने सुना होगा, there was a recently, कुछ 10-12 दिन पहले, there were some charges that were filed. Based on that, there was supposed to be some some hearing around that. Now, based on what is out in the public now, the draft charges which were filed, वो जो charges filed हुए थे by the NCB, they are directly linking the death. मैं death नहीं use करूंगा, I'm going to use murder. The murder of Sushant Singh Rajput with the drug case that Rhea Chakraborty was involved in. यहाँ पर एक और चीज जो बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है. The central agency had said that, please read it and please hear it very clearly. The central agency had said that actress Rhea Chakraborty received multiple deliveries of ganja, which is marijuana, from the co-accused. Co-accused is Shavik Chakraborty. The NCB also added that Chakraborty's brother, which is Shavik, also with drug peddlers, procured packets, which were then handed over to late actor Rajput. इससे ज्यादा black and white में I think I have never heard, never read anything which kind of directly puts at least these two criminals, which is Rhea Chakraborty and Shavik Chakraborty, into their right place. Unless अब कोई जादू हो जाए, some political power या some power, वो कहते हैं ना पैसे की power लग जाए. I don't think, and that's my personal take on it, based on how much I've known the legal system, I don't think there is any escape for Rhea Chakraborty. It is very clear, it is very clearly written. The NCB filed draft charges against the 35 accused last month in the Special Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act NDPC court में. These details they just came out, and that's what they say. The details from the draft report were made available on Tuesday. The filing of draft charges set the tone for the framing of charges, following which the trial begins. So this is indeed one of the best. That is true, Caroline. Looks like they will catch these small pawns like and abetment to suicide and give clean chit.
I don't think abetment to suicide may anybody would be able to get clean chit. At least Rhea, who has murdered Sushant Singh Rajput, will definitely be, you know, charged for sure. Uh, Absolutely not, Disha. I mean, looking at very happy you're insisting. Yes, Rupa, this is a murder. This is a plain, point blank, brutal murder of Sushant Singh Rajput by these people. Hello, everyone. Now we saw AK going scot free too. Then Thai drug case. कोई नहीं निकलेगा अब. Let me just show you now why I feel that she is gone. I'll show you an interview that happened last year. 2020 का है, sorry, 2020 का. I will play it for you. All right, let's listen to this one. It's a 5-minute audio video. रिपब्लिक टीवी पे ये एक सेशन हुआ था जहां पर बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि व्हाट वर द पॉसिबिलिटीज एंड थिंग्स आर कमिंग आउट टू बी ट्रू नाउ. सो लिसन टू दिस. She will be called in for questioning. Rather, she has been summoned once again, or she will have to be back at the Narcotics Control Bureau office tomorrow as well. So while I stay with those live pictures, I want to go across to Swapnil Kodari first and then get his point of view. Swapnil, we were talking about it this morning. It's a matter of time before she's confronted with the facts. Fact is, she was confronted with a drug chat, had no option but to admit procuring drugs via showing. Drugs is a side angle. Murder still the same, still the top focus. Absolutely, Niranjan. Niranjan, absolutely. There is no doubt about it, and at least one, sort of an admission is there by her that she used to procure drugs, and that is very, very nice for the simple reason that the NDPS Act immediately swings into action as far as this admission is concerned about the procurement of drugs. Now, whether it was consumption, peddling, transportation, those are all different sections that can be levied at a later stage, depending upon what sort of evidence does the NCB show to her and how much she admits, or how much they can show to her without even her admitting it, because they can say that, look, this is what it is, and even if you don't admit this, we are certain about it, and then they can start levying those sections. Now, as far as the murder aspect is concerned, her connection with murder is a very, very important factor. According to me, if she was in the last 4 days between 8th and 14th administering drugs so as to benumb him, then he is not in a position to fight back at all if confronted or if attacked by some people, then that definitely makes her a better to the crime, because she knew that this guy was going to be murdered and she was administering drugs heavily. So let me clarify. ये था 2020 September 2020 में this session where it was being very clearly explained that she has admitted of procuring drugs along with Shavik. 2 साल लग गए हमें इस पॉइंट तक आने में, बट देर आए दुरुस्त आए. It is very evident that she had acknowledged and accepted. Now the point that this gentleman was making is very clear. अगर between 8th and 13th के बीच में चाहे वो दिपेश हो, चाहे वो कोई भी हो, सैमुअल हो, चाहे वो पिठानी हो, one of them, if they confirm that the drugs were being procured by Rhea, given by one of them, but was given to them by Rhea, it's the end of chapter for Rhea Chakraborty. Let me just finish this. Uske baad, to the extent of benumbing him. So if it was only earlier benumbing to the extent that she can siphon off his money, that's a different issue. But here between 8th and 13th, if at all she was doing that, or even slightly earlier, if there is medical evidence to that effect, that yes, if you administer drugs and she was in the foreknowledge of the fact that this guy was going to be murdered at some point immediately after Disha Salian's death, then that is something which the CBI will have to piece the dots together, because here, as far as this aspect is concerned, she may just remain to choose mom, which is entirely allowed by the law, to keep quiet on this and leave it entirely to the prosecution to prove it beyond reasonable doubt without the accused opening her mouth, except after all the prosecution witnesses are over and the defense is being put to question. Until that time, she's entitled to keep her mouth shut. Even thereafter, she can just say, I don't know, and that's about it.
but that is going to be a tough task to show that between 8th and 14th she was administering drugs. And if Dipesh Sawant, apparently from what I have heard, is said that she used to procure drugs to administer the same to him between 8th and 13th, if that statement is corroborated by somebody else also, and assuming that Rhea keeps mum on that, then we have a case at hand. That's a live shot outside the NCB office. She's been summoned once again. And I just want to put out some graphics as well that we have of the murder angle. So while I stay with this, we'll put out the graphics of the murder angle, and I want to bring in Aniket also in. Aniket, there are 3 or 4 bits of breaking news information that we have on the murder angle. Now, first up, the Cooper doctors have been confronted once again by the CBI. The confrontation has already happened. They were confronted with the injury marks. They were confronted with the injury marks. They were confronted with the aberration. They were confronted with all the questions that have been emerging. Injury marks. They were confronted with the aberration. They were secondly on the role of Sandeep Singh. Akshay Bandgar, who's the ambulance driver, has also been questioned on the calls between him and Sandeep Singh. Sandeep Singh himself under the scanner for paratrooping there on the 14th of June, staying there on the 15th, taking control of the entire situation. So while some tried to build up this suicide narrative and played on the drugs narrative, the truth is the real picture is emerging only now, Aniket. Only now. That's true, Niranjan. I mean, see, in this matter, there are 3 investigating agencies who are investigating this case from different viewpoints. CBI is investigating the suicide as well as the murder angle. There is ED, which is investigating the financial angle, and there is NCB, which is investigating the drug angle. Now, as far as this drugs case is concerned, it seems that Rhea Chakraborty has given some sort of admission where she said that she was personally consuming these drugs and she was securing it through her brother Shovik Chakraborty. But the larger question is, was she involved in peddling? Was she involved in getting Sushant Singh Rajput addicted to these drugs? And for that, it is very essential to see the version of other persons, that is the roommates of Sushant Singh Rajput, roommates like Pithani, then his Dipesh Sawant, and other floor managers, etc. So all will have to be confronted with this version of Rhea Chakraborty, and will have to be seen whether there are any inconsistencies or not. As far as the CBI investigation is concerned, and as you rightly pointed out, there are a lot of inconsistencies, loopholes, and lacunas in the post-mortem report. We all know that there was no time mentioned. All right. So let me. All right. So this was an interview that happened in 2020, जहां पर बिल्कुल क्लियर वे में एक्सप्लेन किया गया कि अगर ये होता है तो ये सब होगा, और आज की डेट में यही फैक्ट्स सच हो गए हैं. तो आज जो एक अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया, let me just play that as well for all of you, for people who have not seen it. This is something that happened today itself. This is right 15-20 minutes ago, and that's how it happened. Let's listen. और खबर के अंदर भी बताएंगे और सबसे पहले बताते हैं मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर. जी हां, मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एनसीबी के चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया है. रिया के साथ उसके भाई शोविक का भी नाम सामने आया है. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. सुशांत को भी रिया ने सप्लाई किया था, ऐसी जानकारी है. मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक ड्रग्स सप्लाई हुई. चार्जशीट में कुछ और चार्जेस ऐड किए गए हैं. रिया ने मसीह, फैजान, करणजीत, सूर्यदीप से ड्रग्स खरीदा. एनसीबी की चार्जशीट में कुल 35 लोगों के बिना. जी हां, ये बड़ी और जानकारी हम आपको बता रहे थे कि चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसे में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें उस चार्जशीट में ऐड किया गया है, और उसी में तमाम जो बड़े नाम है वो भी सामने आए हैं. इस बात का जिक्र किया गया कि देखिए एक नेक्सस है जो प्लानिंग के तहत बॉलीवुड इंडस्ट्री ने और हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए काम कर रहा था, और प्लानिंग के तहत ही इन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की गई. देखिए इस चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई यानी कि उनके भाई जो है शोविक, ये लगातार ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थे, और संपर्क में आने के बाद ही गांजा, हेरोइन और चरस की खरीद जो है इन्होंने की है, जिसका पैसा सुशांत ने पे किया है. बिल्कुल, और ये जानकारी मिली है कि ट्रांजैक्शन सुशांत के अकाउंट से हुए हैं. रिया चक्रवर्ती के कई ड्रग पैडलर्स के साथ संबंध रखे हैं, ऐसी जानकारी है. एनसीबी की चार्जशीट में कुल 35 लोगों के नाम सामने आए.
कई चार्जेस ऐड किए गए हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चंदन हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित की तरफ मैं सबसे पहले रुक करूंगी। सुमित, कई चार्जेस ऐड किए गए हैं, आपसे जानना समझना चाहेंगे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कैसे आगे बढ़ेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये करीबन 27 पन्नों का जो चार्जेस ऐड ऑन किए गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ना सिर्फ एनसीबी ने 35 लोगों की सिलसिलेवार तरीके से कॉन्स्पिरेसी को एस्टेब्लिश किया है, बल्कि ये भी बताया कि आखिरकार किसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, कौन क्या कर रहा था, कौन कितनी बार ड्रग्स लिया, कहां से लिया गया, ये सारी कॉन्स्पिरेसी को इसमें एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। सबसे महत्वपूर्ण कि आपने पूछा, इसमें जो 7वां और 8वां पॉइंट है, जो आप देखें, जो एनसीबी ने अपने पॉइंट्स में मेंशन किया है, ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में बल्कि उनके भाई के बारे में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और अगर आप देखें तो उसमें यह कहा गया है कि 2020 के अंदर, यानी अगर आप देखें कि यहां पर साफ तौर पर कहा गया कि शौविक चक्रवर्ती वॉज इन रेगुलर टच विद द ड्रग पेडलर्स एंड मेन एंड प्लेस्ड orders for the delivery of ganja, hashish, charas and received many deliveries of ganja from Abel Basit, Kazan Ibrahim और कमलजीत सिंह एंड सूर्यदीप मल्होत्रा, यानी वो ड्रग पेडलर्स जिनके ऊपर सीधे तौर पर एनसीबी की पकड़ थी, उनके साथ सीधा तौर पर शौविक जुड़ा हुआ था। और यह भी बताया जा रहा है कि देखिए, खासतौर पर ना सिर्फ शौविक बल्कि रिया चक्रवर्ती भी ये सारे ड्रग्स मंगाकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी। ये सारी बातें इस पूरे दस्तावेजों में दी गई है। कोर्ट में दस्तावेज सबमिट किए गए हैं एनसीबी की तरफ से और कहा गया है कि ना सिर्फ ये कंजम्पशन, यानी ये खुद इस तरीके का इस्तेमाल करते थे, बल्कि पूरे रैकेट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शामिल थे। तो ये सारी बातें इस चार्जेस फ्रेम के अंदर कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब जब कार्रवाई होगी कोर्ट की, यानी जब अगली सुनवाई होगी, तो दोनों पक्षों से इस कॉन्स्पिरेसी को एस्टेब्लिश करने की बात कही जाएगी। देखिए, आप तमाम जो बातें हैं वो समझ में आ रही हैं कि अब आखिर किस तरीके से जो रिया है उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी। लवीना जुड़ी हुई है हमारे साथ। लवीना, देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था तो हिंदुस्तान ने बड़े ही अच्छे तरीके से तमाम खबरों को कवर किया था, लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जो उस वक्त ड्रामेटिक रोल में थी, वो ये कह रही थी कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ये साफ हो चुका है इस चार्जशीट से कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट 100% था। और देखिए सचिन, सिर्फ उनके इन्वॉल्वमेंट की नहीं, उनके भाई शौविक के इन्वॉल्वमेंट की भी जब बात सामने है। और देखिए, जी हिंदुस्तान ने इस खबर को उस समय भी प्रमुखता से दिखाया था। रिया चक्रवर्ती जो बार बार, आपको याद होगा, ये कहती हुई नजर आ रही थी कि मेरे साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है और मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें निश्चित तौर पर उनके करियर को लेकर भी अब आगे बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, उस वक्त आपको याद होगा जब रिया चक्रवर्ती उस दौर से गुजरी, यानी कि जब तमाम आरोप लगे, हालांकि आप जेल भी उन्हें जरूर जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो एक नाइटमेयर से बाहर आई, हमें कहें तो गलत नहीं होगा। और अगस्त में उनकी दूसरी फिल्म चेहरे रिलीज हो जाती है, आपको याद होगा। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर उन पर ये एक बार फिर से आरोप सिद्ध कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कई बार गांजा लिया था और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके भाई ने भी किया था, तो सीधा इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से एक बार फिर से जोड़ा जाएगा। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने, मैं एक मिनट यहाँ पर पॉज जरूर करूंगा बिकॉज जैसे कि क्वेश्चन रवि जी, पहली बात यहाँ पर लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, वी आर नॉट हैप्पी दैट कि ड्रग्स केस के बारे में बात हो रही है या ड्रग्स केस के अंदर रिया चक्रवर्ती को अब अरेस्ट किया जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस चार्जशीट के, ये जो चार्जशीट फाइल हुई है, मैं आपको दोबारा, अगर आपने पहले नहीं सुना, मैं लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, पूरा का पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, इन द ड्राफ्ट चार्जेस फाइल्ड बाय एनसीबी इन द ड्रग केस लिंक्ड to the death of actor Sushant Singh Rajput, the central agency has said that actress Rhea Chakraborty received multiple deliveries of ganja, marijuana from the co-accused, which is Shavik. The NCP added the Chakraborty brother Shavik also was in touch with peddlers and procured packets, which were then handed over to late actor राजपूत। यहां पर इट्स वेरी क्लियरली रिटन कि नाउ बिकॉज ऑफ दिस द मर्डर एंगल which was what we all were talking about will be highlighted. So now this drug
का जो चाहे उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है या एनसीबी ने फाइंड किया है, बट नाउ it is all linked to the murder of Sushant Singh Rajput, which has been put across in the charge sheet that was filed about 2 weeks ago. So, ye kehna ke, why are we happy? I would not say we are happy, but yes, we are at least content ke the charge sheet that has been filed against Rhea Chakraborty and Shavik Chakraborty confirm and validate that she was procuring drugs. ये जो ड्रग्स वो ले रही थी, उनके जो पैसे थे वो सुशांत की, वो मनी ट्रेल का कनेक्शन बन गया. एंड देन इवेंचुअली if these drugs were somehow given to Sushant Singh Rajput that led to his death or murder, that will make sure that Rhea Chakraborty and Shavik will definitely be arrested, not only for drug peddling, not only for drug procurement, but also for murder of Sushant Singh Rajput. So CBI will definitely take all of this in cognizance, because end of the day, she won't give permission to attend the case and not in person. Always, this is something which is definitely. So let me just finish this, and I would love all of you to join. Anybody who wants to join, let me just play this last bit. मुखर होकर इस बात को रखा था और बहुत मुखर होकर पूरी लड़ाई उनकी बहन ने, उनके परिवार ने, और जो जिस कई सारे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के थे, जिसमें अंकिता लोखंडे का भी उस वक्त सबसे ज्यादा नाम था, वो बार-बार यही कह रहे थे कि इन सबका जो कारण है, इन सबके पीछे की जो वजह है वो रिया चक्रवर्ती है. रिया चक्रवर्ती ने जरूर बहुत ड्रामेटिक प्ले करने की बिल्कुल लगातार हिंदुस्तान ने उस समय बताया था कि किस तरीके से इस पूरे एंगल में, इस पूरे केस में रिया चक्रवर्ती जो है वो मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो हो सकती है. और उसके बाद अब जो चार्जेस ऐड किए गए हैं वो चार्जेस ना केवल कंजम्पशन के हैं बल्कि वो एक कॉन्स्पिरेसी के हैं. तो क्या ये कह सकते हैं लवीना कि सुशांत सिंह मर्डर केस की जांच में इन चार्जेस को ऐड करने के बाद एक नया एंगल आ रहा है और अब इससे रिया की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ने वाली है? देखिए, अब चंदन ये गुत्थी की तरह रह गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का आखिर कारण क्या था. बहुत सारे कारण उस वक्त सामने आए. माना ये गया, पहले अगर खुदकुशी की मैं बात करूं तो ये कहा गया कि वो डिप्रेशन में थे. कई सारे ऐसे इंडस्ट्री के लोगों के नाम भी सामने आए कि उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी. उसके बाद रिया चक्रवर्ती वाला जब एंगल था तो यही था कि उन्हें वो और ठीक है. लवीना, अंकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं. अंकुर, ओवर टू यू. पेमेंट की जाती थी, कैश पेमेंट की जाती थी, गूगल पे किया जाता था. ऐसे तमाम जो पेमेंट मोड है उसके जरिए लगातार इस घर के अंदर जो सैमुअल मिरांडा एक नाम है, दीपेश सावंत है, ये तमाम स्टाफ के से जुड़े हुए लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ हुआ करते थे. ये लोग अलग अलग ड्रग पैडलर से जुड़े हुए थे और ये ड्रग पैडलर से रैंडम तरीके से अलग अलग तरीके से ड्रग्स मंगाया करते थे अलग अलग वक्त में, और उनको पेमेंट की जाती थी सुशांत सिंह राजपूत के कैश से. तो ये तमाम जो चीजें हैं उस कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पर ऐड किया गया है जो मार्च 2020 से सितंबर 2020 की है. और यहाँ पर अब ड्रग्स की खरीद फरोख्त है, ड्रग्स का लेन देन है, उसके लिए फाइनेंस है, ये जो तमाम गंभीर आरोप हैं वो यहाँ पर लगाए गए. ठीक है, तो ड्रग्स के लेन देन का यहाँ पर आरोप है. मानवी तने साथ जुड़ चुकी हैं जी हिंदुस्तान पर. मानवी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है. आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि एक्ट्रेस होने के तौर पर रिया चक्रवर्ती की, देखिए अगर हम बात करें करियर की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरा तो है ही, क्योंकि कई चीजें सामने आई हैं, ऐसे में फर्क तो पड़ता ही है. लेकिन अब ये इन्वॉल्वमेंट उनका साफ तौर से है कि ड्रग्स पेडलर्स के साथ उनका कनेक्शन रहा है. देखिए, हमने पहले भी बहुत डिस्कस करा है कि रिया का ड्रग्स पेडलर के साथ नाता रहा है और रिया सुशांत को बार बार ड्रग्स देती थी और उसी की वजह से कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हुई थी और उसको जेल भी जाना पड़ा था. और अब देखिए दोबारा ये बात उठी है और इसके बीच में रिया को कहीं से कहीं मिली. अगर उसका नाता नहीं होता, अगर उसका कनेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये मामला सुलझ जाता और उसे क्लीन चिट मिल जाती. लेकिन मानवी, बॉलीवुड से ही कई लोग ऐसे थे जो उनके सपोर्ट में भी आए थे. अब ऐसे में तो देखिए चीजें तो क्लियर हो रही हैं, जो चार्जेस ऐड हो रहे हैं. अब क्या वही लोग आएंगे जो ये कह रहे थे कि एक लड़की को फंसाया जा रहा है, उसके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? नहीं, देखिए कोई भी नहीं आएगा सपोर्ट में, क्योंकि जब सब कुछ दिखेगा, अगर चार्जशीट फाइल होती है, अगर आपके पास एविडेंस होता है, उसका सबूत, हर चीज इतनी सॉलिड होती है, तो कौन खड़ा होगा रिया के उससे. झूठ आप कितना मर्जी भी छुपा लें, लेकिन सच्चाई ना एक दिन तो सामने आएगी ना. क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन है, तमाम हमने डिस्कशन और डिबेट करी है जिसमें पता लगा था कि बहुत सारे उसके कनेक्शन है जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिल रही थी. लेकिन कब तक सब
सपोर्ट कोई करेगा। कहीं ना कहीं जब ऐसे सबूत मिलेंगे एनसीबी को तो हमेशा कटघरे में आ जाएगी। और देखिए फिर 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद रिया पे फिर वही चार्जशीट आ रही है नई की, जिसमें सारे के सारे सबूत रखे हुए हैं। और वो अब वो जो फंसेगी तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो म्यूट पे हो आप। ओ सॉरी। थैंक यू आयुष। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन बिल्कुल, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नाउ। और बिफोर आई लेट अदर्स टॉक, आई एम गोना शो यू समथिंग। यहाँ पर किसी ने अभी चैट में भी लिखा था, वो जो चैट मैसेजेस के बारे में बात कर रहा था। यस, HK, दे ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट दैट श्रुति मोदी सेड टू रिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। ये वो इनकी खुद की चैट की स्क्रीन थी, व्हाट्सएप की, जो इनके खुद के ग्रुप की, जहां पर साफ लिखा हुआ था रोलिंग। रिया चक्रवर्ती कह रही है डू बी रिक्वायर्ड, और जवाब मिलता है गेटिंग, फिर रोलिंग। सिद्धार्थ पिठानी कहता है मिरांडा आ गया है, मिरांडा इज हियर, वाटर स्टोन बुकिंग इज कैंसल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। रिया कहती है ये सारी चीजें। उसके बाद शी सेज डू वी हैव अ डूब, चेकिंग, रोलिंग एंड गेटिंग इट फॉर यू। उसके अलावा द सेकेंड थिंग दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ दिस इज समथिंग व्हिच एविडेंसेस में कैप्चर होगा। द सेकेंड थिंग इज दिस स्क्रीन वेयर ये व्हाट्सएप मैसेज था सॉरी 25/11/2019 का, जो जया साहा रिया चक्रवर्ती को लिखती हैं, यूज 4 ड्रॉप्स इन कॉफी, टी और वाटर एंड लेट हिम सिप इट, गिव इट 30 to 40 minutes फॉर इट टू किक इन। सो जया साहा गाइड कर रही है रिया को कि किस तरह से उसकी ड्रिंक में, चाहे चाय में, चाहे पानी में या कॉफी में, कैसे 4 ड्रॉप्स लिखनी है। एंड that's how this was being done. So all of this made it very evident that she was not only peddling drugs, procuring drugs, but also administrating drugs into Sushant without Sushant knowing. और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं. So welcome Sonal and welcome Ayush, and please go ahead, जो कहना चाहते हैं. Hi Varun, hi Ayush. Just a couple of things. Obviously, we don't want to celebrate as yet. And for those who are asking, or those who are saying that, why are you, this is NCB, what is CBI doing, etc. At least this is some movement, right, in the case. Yep. And one request I have for everyone, and I was also saying this in our space, is depending upon whether the news channel or not so much YouTube, but news channel or media is kind of associated with cabal or otherwise, the language they will use is what will be convenient to them and what will float their narrative. So I think we all need to be very, very careful when we share on Twitter, or when we or any social media, or when we talk. We should only go by what is written in the official documents, because I am seeing, I checked a lot of sites and a lot of these media channels and their Twitter handles. They're really, really making it sound, the ones who are with the cabal, they're really making it sound like, oh, Sushant was consuming and this and that. So we should not go by that. We should really, really go by whatever is in the official. And yes, this is the beginning. Obviously, if we see something wrong, we will stand up and fight for it. But at the same time, we also have to be optimistic. We can't just give up. Oh, kuch nahi ho raha hai. So I think let's see how it goes. But also good thing that it's all plastered all over Republic and everywhere, and they're calling it a murder case. So all of those are small good news, right? I mean, we want it that way. We want the word to spread, and so yeah.
That's all I wanted to say. Not just Republic, अभी जैसे मैंने Z का video play किया, and there are other channels. Then I was also reading what the Economic Times. Even on the Economic Times, it says Sushant Singh murder. So finally everybody started to acknowledge it. Finally, जैसे अभी ये जो हम सुन रहे थे इंटरव्यू जिसके अंदर supposedly somebody from the media industry or from the film industry, she is also acknowledging कि जब black and white में plaster हो जाएगा सब कुछ कि भाई you have evidences against Rhea, why would somebody stand next to her, why would somebody support her? हालांकि वो कबाल के लोग जो हैं, जो part of the movie industry भी हैं, they will still stand by her, which is fine, but at least the logical ones, the sensible ones, they will definitely stand against all of this. And finally, all the media channels, all the houses will acknowledge it as a Sushant Singh murder case rather than Sushant Singh Rajput suicide case, जो कि बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया गया for the last one and a half, almost 2 years. But finally they are changing their stand. So glad that is happening. And yes, you're absolutely right, these are small wins. Yeah. Sorry, One go more ahead. thing I wanted to say. So when we write on any of the social media or when we talk, we should say Sushant murder case and we should say Rhea drug case. I think we Correct. should just start using that so that it's, it's out there and people see it and it registers in people's minds. So that's all I wanted to say. Thank you so much, Varun. Sure. Thanks. Thank you so much. And absolutely, I mean, जो हमने सेशन किया था अभी रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उसके ऊपर यही बात हमने की थी कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती was potentially hired as a drug peddler. She was an escort. She still is an escort, and I think she will end up as an escort as well. But as an escort, she was making decent amount of money. But more importantly, after looking at कि यार escort के साथ अगर मैं ड्रग्स करती हूँ तो मेरी इनकम बढ़ जाती है. So I think this is where it all started. सुवेद लोहिया, उसका भी अभी नाम आएगा. He will also be definitely should be arrested as well. But more importantly, रिया चक्रवर्ती के पकड़ने से, शौविक के अंदर आने से, I think they should and they will open up their mouths as well. So even though they are the smaller fishes in the ocean, the sharks are still going to be free, but I'm sure they will also be caught very soon. So this is a good sign. So let's all pray. Prayers में बहुत ताकत होती है. And चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, the most important thing right now is they are convicts, they are the criminals, and even the system will acknowledge and recognize them as criminals. इनको सारे लोग जानेंगे कि यही थे वो. And they are no more वो जो मीडिया ट्रायल की बातें करते हैं कि हमारे पे तो मीडिया ट्रायल हुआ है, हम तो विक्टिम कार्ड खेलने वाली जो बातें, वो सब खत्म हो जाएगी. ऑलराइट, आयुष, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्ते. 2020 में जब इसका इंटरव्यू हुआ था, आप देखिएगा कि इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, सिर्फ खाली बस नॉर्मल चिट चैट. अरे भाई, जो तुम मीडिया वालों को एक औरत का दर्द दिखाई दे रहा है, तुम मीडिया वालों को उस औरत का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जिसने अपने भाई को खोया? उस 74 साल के पिता का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कभी गए एक बार भी? कभी पूछा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वो मुंबई पुलिस में आपने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया? ये नहीं, तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए. यही होता है. जो गलत होगा उसके पीछे लोग भागेंगे और जो सही होगा उसको कटघरे में खड़ा करेंगे. वही हाल हो रहा है यहाँ पे. बिल्कुल. और जिस तरह से आपने कहा प्रेयर्स में बिलीव किया, आई बिलीव इन प्रेयर्स. हाँ, स्पिरिचुअल पावर जब तक आपके साथ है तब तक आप हर लड़ाई लड़ सकते हैं. एब्सोल्युटली. मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, डीएम्स आते रहते हैं, और मैं देख रहा था किस तरह से लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं. सिमी जी ने जैसे लास्ट टाइम एक बार मेंशन किया था, वो केदारनाथ जा रही हैं. अभी यश अभी होके आया है,
there are people doing everything that is possible spiritually. भगवान से वो connection, वो खुद एक भगवान का एक रूप था, वो एक भगवान का एक ऐसा बंदा था सुशांत, जिसने हमेशा चाहे वो अल्टीमेट स्टारडम जिसे कहते हैं वो भी अचीव कर चुका था, बट ही वाज स्टिल ऑलवेज कनेक्टेड अपनी रूट्स के साथ, एंड टू द फैमिली वैल्यूज, टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। सारा का सारा इतना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था उसका, ही डिजर्व्स जस्टिस। और आज की डेट में ही इज नॉट अराउंड, बट आई थिंक हम सबको मिलकर इतनी प्रेयर्स, इतनी दुआएं देनी चाहिए, इतनी विशेस करनी चाहिए that he will definitely get justice. And अब थोड़ी सी उम्मीद दोबारा से जगी है, and I am really happy to see कि चलो first step is taken. So hello Vishal, Jai Shri Ram, and justice for SSR. क्या कहना चाहोगे? Hello, Jai Shri Ram. Good evening, Varun. Good morning, good evening, good afternoon to everyone. How just looking into आप. So, जो update आई है कल as a SSR warrior, it's a bit positive news. कि the next date is there on 27th for the charges which they want to file against Chodai Gang. But I think as an agency, with all due respect to Samisha, this is not for Samisha, but disappointed with NCB. Why they are always mentioning Sushant Singh Rajput drug case, why they're mentioning the drugs who have been handed over to Sushant Singh Rajput. So, 2020, when the first charge sheet was filed by NCB, there also they mentioned Sushant Singh Rajput as a drug consumer, that he consumed drugs. There, they mentioned we didn't have Sushant's phone with us, it was with Mumbai police. So, if you didn't have Sushant's phone to get the data, how can you mention that as that Sushant Singh Rajput drug case? How can you mention in your chat sheet that the drugs were being given to handed over to Sushant Singh Rajput? With just the जो कल की जो रिलीज हुई है चार्ज जो चार्ज फाइल किया है इन्होंने, 4-5 places they have clearly specified drugs were handed over to Sushant. If that is so, then why on the post-mortem report no substances were found? So is it that Sushant used to buy drugs and keep it like a gold in the locker? Are you guys mean to say that as an agency? A question for you, with all due respect, अगर कोई बंदा ड्रग्स खरीद रहा है तो क्या तिजोरी में रखने के लिए खरीद रहा है? खाएगा ना, कंज्यूम करेगा ना, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आना चाहिए ना, कहाँ है भाई? So NCB as an agency, with all due respect, please stop taking this name as Sushant Singh Rajput drug case. It is not Sushant Singh Rajput drug case. It is Rhea and gang drug case. And as per NCB's chat sheet, they have clearly mentioned the drug peddlers who were caught have not even one single person have mentioned that they were in contact with Sushant for the drug dealing. It was always Samuel Miranda, Chudel, Shovik, Hitesh Sawan. सुशांत का नाम किसी भी ड्रग पेडलर ने नहीं लिया. Why on the earth you all are trying to defame Sushant Singh Rajput? Why? He's not alive to say anything to you guys. He's not here to defend himself, so you will say anything for him. With all due respect, NCB as an agency, this is a question for you, and you have to answer this. Because here you all are wrong. You can't defame a person without any proof. Thank you very much. एब्सोल्युटली नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और डिफेम करने के लिए तो बहुत सारे लोग आए सुशांत को। सबसे पहले तो अगर रिया का ही देखे, द काइंड ऑफ वीडियो शी मेड, इट वाज ऑल अ डेलिबरेट एफर्ट। एक वो डेलिबरेटली उसको ड्रग करना और उसी टाइम पे उसको कहीं बाहर बिठाना या जहां भी बिठा के उसके वीडियोस बनाना, दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि कल को जब हम फंसेंगे, कल को अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट वी विल शो दिस इज हाउ सुशांत वाज। सो वहां से वो डेफर्मेशन भी शुरू की, वहां से उसको एक ड्रग एडिक्ट दिखाने की कोशिश की गई, बिकॉज इवेंचुअली यही उनका गोल था। देन द पीपल लाइक महेश भट्ट एंड ऑल दैट, जो अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं और हीरो बनते हैं, जो पढ़े लिखे गवार होते हैं, जो अपने आप को साइकेट्रिस्ट से लेके डॉक्टर से लेके ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट से लेके एवरीथिंग, दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट पीपल,
even they were, they tried to defame Sushant and create a different image for Sushant. Unfortunately for them, Sushant ki powers, spiritual powers, Sushant ke followers, Sushant ke fans, Sushant ke warriors, सबने मिलके इनको इनकी औकात दिखा दी सबको. And this is so good that they have tried their level best. They will continue. ऐसा नहीं है कि उनका भी खत्म हो गया है, ये तो अभी शुरुआत है. एंड अभी तो बहुत नाम आएंगे, बहुत लोग फंसेंगे इस चीज में, and they will get what they deserve, and Sushant will get his justice for sure. But we definitely need to stay focused now. This is a very little kind of, वो कहते हैं ना, एक छोटा सा मोटिवेशनल एक मोमेंट है. लेट्स नॉट मेक इट लाइक अ वेरी बिग हैप्पी मोमेंट, क्योंकि अभी सिर्फ चार्जशीट है, अभी हियरिंग शुरू होगी. दिल विल बी बैक एंड फोर्थ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लेम होंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये शी विल ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्यूज देम. बट वी विल सी कि आगे क्या होता है. बट लेट्स कीप द मोमेंटम एटलीस्ट हाई. ये छोटी छोटी विंस डेफिनेटली हेल्प अस इन bringing a lot of positivity and energy in our movement as well, and that's what matters. So let's make sure. And yes, exactly, Nirasha ji, you're saying right. It's clear SSR was not on drugs. Rhea bought drugs until September 2020. SSR passed away in June. So that's what, even in the chart sheet it's mentioned कि ये जो drugs जो procure हो रहे थे और इनकी जो engagement थी, it started from 2020. I think, let me just check the month. It started between March 2020 to December 2020. Even after Sushant was killed, they were still trying to cover up, it seems. So it is definitely a good sign. So thank you. And yes, Simi ji, namaskar, and please बोलें आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस न्यूज़ पे. You are mute. Hi, there are some disturbances. हाँ जी, ओहो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आज. So I don't know what the choice is. Oh, now it's clear. Can you hear me? Yes, थोड़ी सी आ रही डिस्टर्बेंस, but yes, we can hear you. No, पता नहीं क्यों disturbances आ रहे हैं. So anyway, it's nice, good to hear about what's going on, little progress towards justice. The bad lady is going to be caught for the drugs and stuff like that. तो इंडिया में अभी वो क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा है, एंड हमारे यहाँ तो कल मंदिर में सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपकी आवाज चली गई. We can't hear you. If you can hear us, we can't hear you. Maybe आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा आएं. I'm gonna be here for another 5 minutes, and then we'll. Vishal, I hope you're also not able to hear her, right? Yeah, Varun, can I also say one more thing? So Sure, as sure. per this draft chart sheet, which is being filed yesterday, they have also mentioned that Chudal used to get drugs for Sushant since 2018. You know, she came to Sushant's life in April 2019, and not as a girlfriend, as a person. Jaya Sir ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था सुशांत से, एंड देन विद प्रियंका दी, एंड कुछ शायद वो एक लेट नाइट पार्टी के बाद शी Jaya Sir told them she come to Sushant's place, blah blah blah. Everybody knows the history. तो सुशांत को लाइफ में लाने को एंटर करने का जया सा इज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू गेट चुड़ैल इन सुशांत's life. How come in 2018 Chudal used to get drugs for Sushant? Why the hell is it been mentioned in the draft charges? And Chudal के तो chats NCB ने बताया कि 2017 से chats आए हैं Chudal के. So it's high time this date now, which come 27 for this charges. There should be some positive. I'm definitely sure we will get positive updates, but that Supreme Court bail hearing gets changed every month. NCB now should be a bit strict on that
run behind the courts that we now have all the relevant evidences with us, and we need these criminals behind the bars. Obviously, we know 12,000 charge sheet page hard copies, around 50 to 60,000 digital copies were being submitted to the court. I don't think so. इससे ज़्यादा कि और कुछ कोर्ट को एविडेंस की जरूरत है कि चुड़ैल एंड गैंग नॉट इवन 33 नाउ इनफैक्ट अगर आप कल प्रियंका दी का चेक करोगे इट वाज 35 पीपल नाउ आर देयर इन दैट चार्ट शीट टू मोर Correct. एडेड सो व्हाट आर दे वेटिंग फॉर किसी पंडित का मुहूर्त चेक है if court is not giving you the dates they are busy as an agency it's your responsibility to crack the case because you have sufficient evidence with you. If you don't have the evidence, you're waiting. We can understand. You have already charged the file sheet with, which means you have enough evidence with you to against the culprits. So it's a as an agency, I please know. go ahead It's time. and get this thing done. Or I'm just विशाल, तुम्हारी going to आवाज join back कम in हो गई. 2 minutes. I think you're getting a call. Yeah, I got a call. I'll just join back in 2 minutes. ठीक है, हाँ, ठीक है. All right. All right. While Simiji is trying to, fix the issue, I see Chitali and Raj. So, hello, Chitali. Good to see you, and welcome, Raj. Hello, Varun. Simiji is here, I guess. Will she go ahead and then I'll go ahead? Okay, Simiji, अगर आप Simiji, can you hear us? Yeah, I think she's having some issues with the. Okay. So can Yeah, I go why ahead don't you go right ahead? now? Yes, please. Okay. So my voice is audible and clear? Yes. Okay. See, Varun, the thing is that that person, Rhea Chakraborty, she has stayed with him for a long period of time. Okay. So she knows all the each and every detailing what happened with him. So is in इनको तो interrogation करना is very very much needed. What I will try to convey that since the past 2 years we have seen that sometimes things was on topic, these things are going to happen and all. People were very much excited. Then things was again in the cold zone. So this time the procedure that should go on, the investigation, a proper investigation that should go on. In the last 2 years we haven't witnessed that the continuous process of investigation. It hasn't happened. Things was in the headline, we was very charged up, yeah, definitely something is going to happen, but things was not on process. But this time the investigation and all the procedure that should be on process on a continuous basis, so that some visible outcome that must come on, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि things will be getting influenced again, things will be getting stopped or postponed. That should not happen, क्योंकि in this case all the three agencies का involvement is very much needed. So maybe if one agency will come with a proper conclusion or anything, maybe it can be very helpful for the other agencies as well. Maybe if things will come up, that NCB can bring some truth from that person, Rhea Chakraborty, that can be helpful for CBI as well. And maybe it can help CBI to file the charge sheet at the earliest, right? So first thing, definitely is a small win, is a small win for us, for all the warriors who is fighting. But at the same point of time, the procedure that should be go on. ऐसा नहीं होना चाहिए. After 2 months, things are again going to get silent, and we are waiting. When the update is going to come. It should not be like that. First thing, True. because about this case, 2 years have been passed. In these 2 years we have done our job properly, right? Each and every day we have raised voice. We have done all the possible ways we can raise voice for him. And right now it's the time the agency should act upon very much actively in this case. First thing. And second thing is, with due respect, in the charge sheet it is mentioned, right, that Sushant Singh Rajput case. I mean, that person didn't used to peddle drugs. So why to write that, Sushant Singh Rajput case? That lady Rhea Chakraborty, she used to peddle drugs. She was the person, who make him the have like ye jo conspiracy mein she was involved. Things should be coming on her. And
till the date Sushant was alive and active, in the social media we haven't came across any such picture of him. आफ्टर ये सब इंसिडेंट होने के बाद इन्होंने जो प्लानिंग प्लॉटिंग किया है with her brain, to portray his image in a wrong way, just to make everyone tell that he used to take drugs and all. तो इतना इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया है, हाई टाइम she should come and reveal everything, right? And Exactly. no, to interrogate the person, Rhea Chakraborty is very much important. She was there with him for all the time. She knew each and every detailing. So high time, that lady that she should be interrogated and she should reveal the truth. And maybe once she reveal the truth to NCB, that can be helpful for CBI. And maybe after that CBI may come up with the charge sheet. So the investigation procedure, in the procedures hota hai, definitely it's a long time procedures. You know, like months and months chalta hai, loka hearings वगैरह and all. But that should go on. The momentum that should go on. Things should not go in a cold zone. It's very much needed that CBI as well, they need to come forward and file the charge sheet, because Varun, see, after few months, maybe after 4 to 5 months, if CBI will file the charge sheet as well, it's not like that the case is ending. इनका भी procedures होता है, right? There will be hearing, there will be other stuff. पूरा एक साल 2-3 साल का procedures लगता है. It's a time taking procedures. So how much delay we are expecting in this case? It's been almost 2 years. So agencies, they should be proactive, and we are looking forward for proactive result. And apart from Rhea Chakraborty, the other people who is to stay, with them on that time, like they also must, expecting that they will also come and they will reveal the truth. क्योंकि 2 साल हो चुका है, high time things will be in a zone right now जहाँ पे punishment should be there to all the culprits, because it is such kind of a case. यहाँ पे there is not a particular person, there are a whole lot of persons. So first of all, one person need to bring out on that zone, and the rest they will come out automatically. It's the entire thing, and it's all about the agencies, how they're how they can work on these things. And glad to see that agencies are on an active zone right now after so many days. So yeah, things should be going on, the momentum should be high. And ये agency जो आज activeness दिखा है, that should be carry on. Things must not go in a cold zone, otherwise it's very difficult. After a few months, you have to expect something is going to happen. So that should not be like that. And it's very glad that after 2 years, जब से 14 जून हुआ है, we are witnessing some of the good things in this for this movement, like the downfall of NVA. Now the today's news, expecting that things will be in a positive way. And definitely all the people, it's not only Korea, all the people who was behind this conspiracy, high time they should get the punishment. movement इसीलिए है, जो भी इन्वॉल्व था इस केस में, दे नीडेड टू गेट द पनिशमेंट. एंड वरुण कैंपेन भी इसीलिए चल रहा है, राइट? सो आई गेस एक टाइम वी हैव डन आवर पार्ट. इट्स हाई टाइम दैट agencies should come, not only MCB, you're expecting same from CBI as well. What CBI is doing for 2 years. रही बात प्रूफ्स की, इतना प्रूफ तो सोशल मीडिया में अवेलेबल है. If you go in the taglines and all the old taglines, if you dig, आपको तो 70% proof तो social media से ही मिल जाएगा, जो SSR warriors ने दिया है. So agencies, they are well trained, efficient people, must be they have having plenty of evidences in this 2 years. So what these people are doing? So high time CBI also need to come forward with a proactive outcome, and they also need to file the charge sheet in this case. High time, Varun. It's been 2 years. What we are expecting? Are we expecting a Jia Khan case? After 8 years, also her mom is fighting. There is no visible outcome. Yeah, for Jia Khan case, you can put a point. On that time, social media में इतना trend नहीं चला, right? But for Sushant, we haven't given you the scope. The entire world is fighting day and night, right? And like Twitter trend कोई देखता नहीं, ये तो कोई claim कर नहीं पाएगा, वरुण, because ministers
official, influential, every person in this country, they go with the Twitter trend. What True. is the topmost trend in the country, right? And for the Sushant trend, we be on the top 4 to 5 every day almost. We have been in the topmost as well. तो कंट्री की जितनी ऑफिशियल्स है जिनको हम टैग करते हैं ट्विटर में, पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया, आईपीएस एसोसिएशन, ऑल द हैंडल्स, they witness the trend every single day. So why this silence? The silence need to break high time, and Varun, along with NCB, CBI also need to come forward and file the charge sheet against all these culprits. That much I wanted to convey. I've seen that you have done one live for Rhea few days back. It was very informative one. There was some of the information which we didn't know. I came to know from your live all these things, and thanks for bringing up all these points back. You know, for Rhea, you have done that right for Rhea and for the other person as well. क्योंकि whenever you are bringing those points back ना, तो सब में वो जोश मिलता है, to go through with this. Yeah, what happened? These people are involved. यहाँ पे और भी name involved है. Your last session was very helpful, and Varun, keep these things continue. Let keep on this momentum high. Next month on 19 August, CBI का competition हो रहा है 2 साल का. CBI has taken over the case. It's unfortunate that being the premier investigator, getting agency, a basic 302 भी impose नहीं हुआ है. Maybe we're going to do something on that. 2 years probably we will do a campaign. So that's the thing, Varun. I just would like to convey, yeah, it's definitely a small win, but at the same point of time, the momentum that should go on. Agencies, they should not get back to that cold zone. The procedure should be on, and you also please continue, the way you keep the momentum high. Thank you. Thank you so much, Atali. Very insightful, and you've laid down few points very beautifully. So thank you for that. More importantly, end of the day, I think we all need to continue doing our bit. चाहे वो ग्राउंड पे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो डिजिटल प्रोटेस्ट हो, I think we should all continue roaring. And now with all these updates coming in, I think it's high time. It's high time that all the criminal, they are actually arrested. उनके ऊपर ट्रायल जल्दी हो, and they are behind bars. चाहे वो ड्रग केस हो, चाहे वो मर्डर हो, and eventually I'm sure now with this drug case, Sushant Singh Rajput murder case will also have some information passed on from the drug case of Rhea Chakraborty. So really happy to see this, and thank you so much. Keep us all motivated with all your work as well, and really good to see you again. Good to see you. Good to see you. Yes. All right, Raj, I think आप मुझे शायद रिपब्लिक दिखाना चाहते हैं, so you want to say something? यस सर वरुण भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज शाम 7 बजे अर्नब सर आ रहे हैं रिपब्लिक पर रिया ड्रग्स केस में बोलने के लिए. यस, आपने चैट में भी लिखा था और किसी ने स्क्रीन में भी लिखा था, तो मैंने वो दिखाया. सो 7 बजे आई थिंक वी विल सी सपोर्ट फैक्ट्स आउट. टाइमिंग स्टार्ट हो गया है 7 घंटा 15 मिनट. अभी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया है अर्नब सर ने. 7 बजे पूछता है भारत. वेरी नाइस. तो 7 बजे आज हम सुनेंगे कि इस केस से रिलेटेड, रिया चक्रवर्ती ड्रग केस से रिलेटेड और अभी लाइव चल रहा है और आएंगे. और अभी लाइव चल रहा है रिपब्लिक भारत पर, वही केस के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है. वंडरफुल. So I will definitely try to wrap it up जल्दी, ताकि आप लोग वो भी देख सकें. So thank you so much, Raj, आप ये शेयर करने के लिए भी. All right, Simi ji, please go ahead. I hope we can hear you now. Hi. Yeah, looks like the disturbance is not as much, or hardly. I tried my laptop and it says update, and then I don't have time to update that, so I'm back on my iPhone. नहीं, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं उनका एक भजन गाने वाली थी, तो whenever you're ready. Sure. Then give me 2 minutes. मैं फटाफट गौरव को भी लेता हूँ, गौरव को भी सुनते हैं, और then we'll end it on you. Okay.
थैंक यू सो मच। यस प्लीज गौरव, क्या कहना चाहोगे आज आप? हाँ जी, राधे राधे वरुण जी। राधे राधे जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने लेट ज्वाइन किया आपका स्ट्रीम, मैं कुछ नो कर रहा वरीज था, सर। तो ये मेरे ख्याल से आप ड्राफ्ट चार्जेस की बात कर रहे हैं जो हाँ, वो उसकी इंफॉर्मेशन अब बाहर आ गई है। बेसिकली कल जैसे हम परसों हम बात कर रहे थे, राइट? और आपने कहा जी था कि उन चार्जेस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और चार्ज शीट की डिटेल्स। तो उस टाइम मुझे लगता है लक्ष्मी जी आपके मुंह में बैठे थे, और जी साथ ही लक्ष्मी जी नहीं, वो क्या दूसरी वाली सरस्वती जी। सरस्वती जी सरस्वती जी, हाँ, सरस्वती माँ आपके बैठे थे, क्योंकि आप देख लो वो डिटेल्स बाहर आ गई हैं। देर आर 35 लोग हैं इस चार्जशीट में, और एक चीज जो बिल्कुल क्लियर कह दी गई है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक, ये ड्रग पेडलर से ड्रग्स लेते थे और सुशांत को देते थे। दिस इज अ बिग बिग थिंग इन दिस चार्जशीट। जी हाँ, ये जो आपने बात कही, देखिए आपने कहा मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी हुई थी, तो देखिए मैंने तो बोला था बस, और अब मंच आपका था, इतना बड़ा आपका मंच है, वहां से कहाँ कहाँ तक आवाज गई होगी, तो नहीं, उसका भी फर्क पड़ता है। हमें बोलना चाहिए, कम से कम बोल तो सकते हैं, कम से कम बात तो कर सकते हैं, हम आवाज तो उठा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, तो उससे ही कभी कभी रिपल इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इसीलिए तो एक तो कहते हैं ये कि अच्छी अच्छी है। चीजें बोलो, ताकि वो द एंटायर वर्ल्ड, द यूनिवर्स कंस्पायर्स। कई बार ऐसा होता है कि आपके बोलने से ही। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। प्लीज गो अहेड, क्या जी कहना जी चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा इसमें, मेरे ख्याल से आप वाइंड अप करना चाहते हैं अब जल्दी से। आप बोलो, कोई नहीं कोई जी नहीं मैं रुक जाता हूँ, आपको पता तो है। आप बोले। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी जैसे कि आप कह रहे हैं, मैंने बोला था कि ये ड्राफ्ट चार्जेस है, ये चार्जशीट तो नहीं है ना, ये बस ड्राफ्ट है एक। तो बेसिकली उस चार्जशीट के अंदर जो फाइल की थी एनसीबी ने, ये उसके अंदर जो चार्जेस लगे हैं अगेंस्ट रिया, शौविक एंड नहीं नहीं अदर्स। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चार्जशीट है या ये सिर्फ ये ड्राफ्ट है। मैंने सुना है ये सिर्फ ड्राफ्ट है, फाइनल चार्जशीट नहीं है ये। नहीं नहीं, ये ये चार्जशीट है। ये लेट मी अच्छा, रीड आउट टू यू अगेन। So basically, in the draft charges filed by the NCB in the drug case, the central agency ने जो details दी हैं, this is part of that charges. So the charge sheet has been released to the public on Tuesday. This is what it अभी is. आपने बोला, आपने खुद ही बोला ड्राफ्ट चार्जेस, तो इस ड्राफ्ट चार्जेस का क्या मतलब हुआ, मतलब जो आपने पढ़ा चार्जेस, ना अभी। हाँ, तो ड्राफ्ट चार्जेस जहां तक मुझे समझ आया था और जितना मैंने पूछा था, तो ड्राफ्ट चार्जेस मतलब वो चार्जेस जो उस चार्जशीट के अंदर ड्राफ्ट करके या डॉक्यूमेंट करके लिखे गए हैं। ठीक है, हाँ ठीक। तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं यही चार्जशीट है, फाइनल है चार्जशीट। तो इसमें आपने अभी मुझे बताया कि सावंत है, पिठानी है, और ये सारे, और रिया चक्रवर्ती, ये सब मिलकर ड्रग खरीदते थे। तो खरीदते थे तो किसी ड्रग पेडलर से ही खरीदते होंगे ना। करेक्ट। एक तो ये पॉइंट है। तो ड्रग पेडलर से आप खरीदते हो तो सीधे सीधे आप जो 27A होता है, ड्रग का प्रोक्योरमेंट और उसका इलिसिट ट्रेड, उसके दायरे में आप आ गए। अब उस इतना क्लियर दिख रहा है, उसके बाद भी बिल्कुल। अगर इन पर ये वाले चार्जेस नहीं लगाए जाते तो दिस विल बी द सैडेस्ट आयरनी। एक बात। अरे दूसरी फिर बात, तो आई थिंक सिस्टम ही पूरा फिर तो करप्ट हो जाएगा बॉस। अगर अब इसके बाद भी अगर ये किसी तरह क्लीन चिट मिल गई ना, तो फिर तो क्या कहें, फिर तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। जी वही बात है। तो मैंने कहा इट विल बी द सैडेस्ट आयरनी। और उसमें मैं ये भी कहूंगा, अच्छा दूसरा ये कहते हैं हम सब ये सब करते तो थे, ये सब गड़बड़ झाला, ये गोलमाल, लेकिन ये सब कहते हैं ये तो हम सुशांत को दे देते थे। इन्होंने एंड में ये भी एनसीबी ने मान लिया है क्या? बाकी डिटेल्स अभी नहीं है चार्जशीट की। आई थिंक वी विल हैव टू लुक एट द एंटायर चार्जशीट, क्योंकि ये जो कुछ चीजें जो सेगमेंट्स बाहर आई हैं, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली गेट होल्ड ऑफ द एंटायर चार्जशीट। सो लेट्स होप कि अब हमारे कुछ जल्दी उसके दर्शन हो। ठीक है, हाँ मैं एक बार आपका शो शुरू से देख लूंगा, उसके बाद आप नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें हम ओपन डिटेल में बात कर लूंगा। बस Sure. मेरे को इतना कहना है, हाँ जी, बस मेरे को इतना कहना है कि ये लोग तो ये कह ही रहे हैं कि हम करते थे और हमें सुशांत कहता था, हम उसको दे देते थे, ना हम कंज्यूम करते थे
और ना हम अपने लिए ला रहे थे। हम तो सुशांत के कहने पर सुशांत के लिए ला रहे थे, ये लोग तो कहेंगे। पर क्या एनसीबी ने भी इस बात को मान लिया है? मेरा पॉइंट ये है इस पर। नहीं, तो वही मैं दोबारा से ना रीड करता हूं। In the draft charges filed by the NCB in the drug case linked to the death of actor Sushant Singh Rajput, the central agency has said, and I quote, that actress Rhea Chakraborty received multiple deliveries of ganja, which is marijuana, from the co-accused. Co-accused in this case is Shavik. The NCB added that Chakraborty's brother Shavik also was in touch with peddlers and procured packets, which were then handed over to late actor Rajput. The NCB filed draft charges against 35 accused last month in the special NDPC court, and the details from the draft report were made available today or Tuesday. And last statement जो मुझे भी थोड़ा it is really nice is the filing of the draft charges sets the tone for the framing of charges, following which the trial begins now. जी ठीक है, हाँ ये तो अच्छी बात है, ट्रायल बिगिन हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो बातें आपने कही, इसमें तो यही आ रहा है ना निकल कर कि सुशांत के कहने पर लाते थे और सुशांत को देते थे। ये जो बात है नहीं, सुशांत के कहने पे नहीं लिखा कहीं पर। वर्डिंग बड़ी क्लियर है that they used to procure it and give it to and hand it over to late Rajput. Now you can interpret it in different ways, पर यहाँ पर बिल्कुल इंटरप्रेट कर सकते हैं सर। एक होता है गिव देना और एक होता है हैंड ओवर कर देना। हैंड ओवर करना एक अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। और देने में ये भी आ सकता है कि हम धोखे से देते थे, हम चुपके से देते थे, हम जबरदस्ती देते थे। हैंड ओवर करने का मतलब तो एक खुशी खुशी सारा काम हो रहा था। हैंड ओवर करने का मतलब तो ये होता है। तो ये एक तो लैंग्वेज है, ये इसमें लूप होल बनते हैं। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा फिर से कि वो लास्ट टाइम भी मैंने कुछ उठाया था कि वो जो व्हाट्सएप चैट थी कि हम 4 ड्रॉप्स देते हैं उसे, उसमें किक लगती है, वो वाले चार्जेस एनसीबी क्यों नहीं लगाती इनके ऊपर? I know, which is very surprising. I don't know इस पूरी चार्जशीट में है कि नहीं है, but वो वाली जो स्क्रीन्स थे, जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे, जो मैंने दिखाए भी अभी, this particular screen, use 4 drops in coffee, tea or water and let him sip it. Give it 30-40 minutes for it to kick in. This is a clear case of drugging someone without his knowledge. Without knowledge, without consent, and with fraud, intention of fraud. Exactly. And that too, with the intention to harm him. Yeah. Correct. So ये वाली जो चीज है, ये ना पहले के बेल ऑर्डर में थी कहीं पर, जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था, और इस चार्जशीट में भी कहीं नहीं है। जब तक आप ये नहीं लगाओगे, तब तक आप अगर ये सोच रहे हो कि ये प्रूफ कोर्ट मानेगी नहीं, वो कोर्ट के ऊपर है भाई। आप अपना काम करो, आपके पास जो है आप प्रेजेंट तो करो। आप पहले से ये कर लोगे कोर्ट नहीं माने, यार कोर्ट नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, आपको फांसी पर थोड़ी लटका देगी एनसीबी वालों को। आप प्रेजेंट तो करो सामने, आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, इससे तो आपकी इंटेंशन पर डाउट होगा फिर। I'm gonna assume right now कि ये सब होगा बीच में। It's just not that it's come out in public. So जब तक आती नहीं तब तक we should not speculate. But I'm pretty sure ये एक बहुत बड़ा evidence था, ये public में आया है, media channels ने इसको उठाया, तो I'm sure this would have been taken into cognizance. But let's hope for the very best कि ये भी आया है। तो देखिए, अगर हम होप कर रहे हैं ना, तो उसके साथ हमें ये भी आवाज उठानी चाहिए कि चार्जशीट की ज्यादा से ज्यादा डिटेल हमारे पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ इससे आप दे दो, कुछ इससे छुपा लो। पूरी की पूरी चार्जशीट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर फॉर द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगर वो आएगी तभी तो हम कुछ तय कर पाएंगे। अदरवाइज वी कैन ओनली स्पेकुलेट, इट माइट हैपन, इट विल हैपन, इट वुड हैपन। तो बस पहली बात तो ये है कि जो अच्छा है, कुछ चीजें आई हैं बाहर, लेकिन चार्जशीट पूरी बाहर है ताकि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से और प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि क्या कर रही है एनसीबी और क्या नहीं कर रही है। तो हम एनसीबी अच्छा कर रही है तो हम उसे सपोर्ट भी करेंगे, हम उनको बूस्ट भी करेंगे, और लेकिन पता तो लगना चाहिए उसके लिए कि कर क्या रहे हैं। So I think let's all keep the hopes high. Let's all wish के
जैसे ये अपडेट बाहर आया है और भी अपडेट्स बाहर आएंगे और भी ऐसी चीजें कवर्ड होंगी इन द चार्जशीट. लेट्स कीप द होप्स हाई. और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, दीज आर स्मॉल लिटिल विंस. इसको सेलिब्रेट नहीं करना, बट हाँ इससे और मोटिवेट जरूर होना है कि जैसे ये अपडेट आया है वैसे ही अगला अपडेट ये भी आ सकता है कि CBI has come out and found link between Rhea and the murder. She was definitely involved in the murder of Sushant Singh Rajput, and there we go. वहां से I think hearing will be completely different. और I just hope and pray कि ऐसा जल्दी हो. अभी के लिए let's keep the positivity high. Prayers, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, let's all keep our prayers on, our sending our positive vibes to the family, क्योंकि I'm sure today the sisters would be definitely talking about it कि what does this mean, इसका next step क्या होना चाहिए, किस तरह होगा. So we should send all our positive energies to them so that they can think logically, they can act logically, and they get justice for their brother, justice for that dad जो इतने 2 साल से वेट कर रहे हैं. So I think this is all in the right direction. And जैसे कि अभी गौरव ने कहा, once the entire chart sheet is out, we will definitely do an entire kind of session around it, और उसके अंदर और details में देखेंगे. And if we find any loopholes, which is quite possible, if we find any loopholes, we should definitely bring that out. We should share it with everybody and let the family kind of take the final call कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज के बारे में discuss किया जाए. So I think let's focus on that, and let's make sure that we do the right thing and get everything on the positive track. So on that note, Varun, I just want to add one point. Can I go ahead? sure, please go ahead. ओके वरुण, ये जो फाइल हुआ है चार्जशीट, दैट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्रॉम लास्ट फ्यू ऑफ द मंथ्स, आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस्ड और नॉट, सम ऑफ द PR एजेंसी दे वाज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई रिया, that she's coming out from yoga, and she's roaming here and there scot free. I heard that she was about to sign a movie as well. So ये जो ट्रेंड है बॉलीवुड में, एक तो you're supporting a criminal. Second thing, whose name was registered in the FIR. And second thing is that you are empowering that criminal. You are glorifying that criminal through your PR agency. So that trend, that must stop right now, right? And ये बहुत demotivation है warriors के लिए. The person who was involved in this murder conspiracy, she is roaming here and there scot free. She is attending all the high profile marriage. She is coming out from yoga. She is doing for a movie. I think ये जो PR agency बैठ के इनको glorify करते हैं ना, that thing will be stopped right now. Rhea Chakraborty used to consume marijuana. Everybody knows that. That chat leaked out earlier as well, right? तो जो मैरिजुआना कंज्यूम करते हैं, आपको उनको फिल्म में लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी तो एजेंसी ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया है. So I think high time that will be come to the end right now. Those paid Bollywood PR, they should stop glorifying Rhea right now. उनके खिलाफ तो चार्जशीट है. तो I do believe you're not going to cast that person in your movie, right? जिनके खिलाफ में चार्जशीट हो. आप तो क्रिमिनल को पहले से empower करते हो just to sign her in a movie. That to some big-rated movie stuff and all. Right. So correct. मैंने सुना, कल ही सुना कि तमिलनाडु के कोई साउथ इंडियन इंडस्ट्री के कोई प्रोड्यूसर हैं who has offered a movie to Rhea. मैं अभी थोड़ी देर बाद जाके I'm going to tweet and I'm going to respond to him कि अब क्या कहेगा after this charge sheet or the details that have come out. अब इस टाइम के बाद भी उसको मूवी देगा, and he just announced it. Yeah. So are you okay to cast the person? I mean, you knew that she used to consume marijuana, she used to peddle drugs. Those things was leaked out earlier as well, right? But still, you are very much okay to cast that lady in your movie. And right now, the NCB has filed a charge sheet against that lady. So are you very much okay to proceed with that movie? And are you still going to glorify her? Hopefully not, right? So that was my point. That is very much needed, right? Not only glorify. Sorry to interrupt you. मैं एक important बात कहना चाहूंगा. Glorify करने का मतलब क्या होता है? ये तो इनका ट्रेंड रहा है वैसे बॉलीवुड वालों का. चाहे गाड़ी चलाने वाले भाईजानों, चढ़ाने वाले, या टाटा वाले भाईजानों, दत्त साहब, ये इनका ट्रेंड रहा है. और ये इनका ये होता है, ये आने वाली हमारी जनरेशन को करप्ट करना. ये बॉलीवुड का पहले से
एक एजेंडा रहा है इंडिया की जो फैब्रिक्स हैं, जो फैब्रिक्स हैं, उनको वीकन करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, और इस तरह से इन लोगों को आगे जाकर एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करना कि जो हमारी ये यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, और जो एडोलेसेंट पीपल हैं, खासकर वो, और इनको क्या कहूँ, मैं वो अच्छे इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पहले तो इनको भगवान मानते थे लोग, अब तो फिर भी अवेयरनेस आ गई है। तो ये इनको रोल मॉडल की तरह बनाकर पेश करके भारत को और धर्म को हानि पहुंचाना, ये मैं कहना चाह रहा था। Right. And let me just correct, मैंने अभी देखा, it was not a South Indian producer. The producer is a Bengali script that has been offered by some Rana Sarkar, who is a True that. Bengali Varun, he was a Bengali producer. I mean, I'm to a Bengali, but can't help, right? Every Bengali can't be like me, that who will be fighting for the right cause. So that is the point. That, I mean, we should tag that producer and the director with, अगर चार्ट शीट जब आ जाएगा ना, चार्ट शीट का कॉपी लेके तो उनको we should tag in Twitter. So are you okay to cast her in the movie? That is the point. And Varun, one thing, आपने जो चैट दिखाया कुछ देर पहले in your screen, that the chat was with Jaya Shah, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है 3 to 4 drops you have to consume with tea or any other liquor. So यहाँ पे तो क्लियर है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है. If he was a pro person, then he couldn't need the instruction how to consume it. राइट इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है who is a very newbie, I mean जिनको शायद कंज्यूम किया करवाया जा रहा है. So pretty much clear the strategy Rhea Chakraborty paid to make public fool. You are exposing yourself, right? उस चैट से ये प्रूव नहीं होता है कि this Sushant used to consume drugs. उस चैट से ये प्रूव होता है that you used to make him consume drugs, right? So ऐसे 100 chats available है, बहुत डेटा है. And so high time, the NCB should, work very, very strictly against this person, right? Kyunki ye Sushant Singh case is a case of a lot of conspirators. If one person will be bring in front, eventually the rest will come out automatically. So एक को सामने लाना very much needed. Yeah, देखिए वरुण, it's a human psychology. Everybody want to make themselves safe zone में रखा है. तो एक अगर आ जाएंगे danger zone में, बाकी तो automatically आ जाएंगे सामने. So it's very much needed. Right. So high time. Yeah, NCB should work very strictly against this person. And इनके खिलाफ तो charge sheet हो अच्छे से. And after that, CBI also should file the charge sheet against the person, and the case must go ahead. That much I wanted to say. Thanks. I completely agree with you, madam. मैं देखिए वरुण जी, एक आदमी जब फंसता है ना, तो अपनी जान बचाने के लिए फिर मुंह खोलता है कि नहीं मेरे से तो इसने करवाया था, मेरे से तो इसने करवाया था. और जब आदमी फंसेगा ही नहीं, तो वो सोचेगा कि मैं क्यों किसी का नाम लूं, मैं क्यों किसी के बारे में बताऊं. जब फंसेगा ना, कोई भी एक आदमी या रिया फंस जाए, तब ये जाके बताएंगे कि नहीं हमने ऐसे नहीं करा था, हमसे तो इन लोगों ने करवाया था, इन लोगों ने जबरदस्ती की थी हमारे साथ. तो बिल्कुल मैडम ने सही कहा. ये जो ड्रग केसेस को लाइट नहीं लिया जाता, ये SSR मर्डर केस से डायरेक्टली और प्लेनली लिंक है. क्योंकि जो इसमें ये भी कहा गया है कि 2018 से ये चल रहा था सब. इस ड्राफ्ट चार्जेस में अगर आप देखें तो 2018, मतलब 2-2.5 साल तक चला है ये. 2-2.5 सही कह रहा हूं ना मैं? यप, बिल्कुल. तो 2-2.5 साल तक जो चीज चली है, कितनी लंबी कॉन्स्पिरेसी है, कितने बड़े लोग होंगे इसके पीछे. अब हमें जो सामने हैं, मैं मानता हूं वो छोटी मछलियां हैं, कोई भी, और बड़े मगरमच्छ हैं इसके पीछे, लेकिन लीड तो उन्हीं से मिलेगी ना. जब वो छोटी मछली फंसेगी तो वो बताएगी, जब तड़पेगी कि नहीं मुझे तो उस मगरमच्छ ने कहा था, वो मुझे खा जाता, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई. जो भी है, ठीक है ना, तभी बात बनेगी. और ये यहाँ पर ये डायरेक्ट मर्डर से ही जुड़ रहा है. ये मर्डर करने की कॉन्स्पिरेसी है. आप उसको वीक करना, उसको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, और उसको ये तो ड्रग्स देना, उसको आइसोलेट कर देना, उसको उसके फैमिली से कनेक्ट ना करने देना, उसके सारी चीजों पर कब्जा कर लेना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन का. ये तो बहुत सीरियस चार्जेस हैं. मतलब आप इमेजिन करिए, अगर ये अपोजिट होता, अगर ये किसी लड़की के साथ हुआ होता, किसी वुमेन के साथ, और वो किसी आदमी पर, किसी मेल पर ये सारे चार्जेस होते, तो कयामत आ जाती.
मैं सही बता रहा हूँ, भूकंप आ जाता है इस देश में, सुनामी आ जाती। बिल्कुल। अभी लेकिन लोग इसको पता नहीं क्या चक्कर है, किस तरह से कर रहे हैं। सॉरी, कुछ गलत निकल गया मेरे मुंह से। नहीं, कोई गलत नहीं निकला, कोई गलत नहीं निकला। यू नो, दीज आर द इमोशंस, दीज आर द राइट इमोशंस। मैं देख रहा हूँ विशाल और आयुष आए हैं, सो लेट मी जस्ट यू नो व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू एंड दिस, बट लेट्स हियर आयुष, क्या कहना चाहोगे आप, एंड देन वील गो बैक टू विशाल। बोलो आयुष। हाँ, तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी तो सुनाता हूँ। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए, एक बार भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। यू नो, आज ट्विटर पे बहुत सारे लोग कर्मा कर्मा के ऊपर लिख रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ एक और मेरे को जो मैसेज आया है, कर्मा इज लाइक अ रबर बैंड, यू कैन ओनली स्ट्रेच इट सो फार बिफोर इट कम्स बैक एंड स्मैक्स यू इन द फेस। ये इतना सही है कि बेटा बहुत खींच लिया, बहुत देर वेट कर लिया, यू नो, और बहुत हमने दिखा दिया अपनी जिम के बाहर वॉक, हमें अपने बर्थडे केक सेलिब्रेशन, शादियों पे जाके नाचना। Now is the time to pay back. So, you know, a great message. So thank you Ayush for sharing it. Yes, Vishal, क्या कहना चाहोगे? Yes, thank you. So just know, जो कॉल आया था, just would like to tell you about that call. It was harsh. आपके लाइफ पे भी काफी बार आया, who played Sushant Singh's role in Pavitra Rishta. So I was talking about Sushant with you on the live, and I got his call. So this is Rapta with Sushant. Yeah. And so you know, about दो points और खाली रखना चाहूंगा वरुण. Old staff of Sushant, including the bodyguards, they, and in fact Sushant ने खुद अपने काफी इंटरव्यू में, they used to hardly sleep for 4 hours, which was more than enough for him. He used to get up early morning, meditations, jogging, exercise, and अपने टेलीस्कोप से स्टार्स देखना, everything. भाई ये कोई डिप्रेस बंदा या कोई ड्रगी बंदा नहीं कर पाएगा। 4 घंटे की नींद not sufficient. Also, exactly. His staff clearly said he used to enjoy going for swimming, playing lawn tennis. वो हमेशा क्लब जाता था ये सब करने, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अपनी एकदम स्पोर्टी बंदा था वो। तो कोई बंदा ड्रगी डिप्रेस बंदा ये नहीं कर सकता। सो ऑल दिस इज a loud and clear message to all those chomus who say that Sushant is a druggie and who say Sushant is a depressed person. भाई उसके वीडियोस देख लो, उसके ओल्ड स्टाफ, जेन्युइन स्टाफ जो थे उसके इंटरव्यू सुन लो, आपका भौंकना बंद हो जाएगा। नहीं तो हम आपका भौंकना बंद अच्छे से करा सकते हैं। डेयर यू से एनीथिंग फॉर सुशांत, ही वाज नॉट लाइक दैट। थैंक यू। बहुत सही कहा, थैंक यू सो मच आयुष जी। बस मैं आखिर में कहना चाहूंगा, बस मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारी बहनें हैं, मतलब सुशांत की बहनें, जो हमारी भी बहनें हैं, और उनके पिताजी हमारे भी पिताजी हैं, उनका हमें साथ देना है। उनको वो हमारा मोरल बढ़ाते हैं बेसिकली तो, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर वो कभी उनका हौसला कम हो तो हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम इस लायक बन सकें या बने। और दूसरी बात ये है कि जितना इस पर ज्यादा बात होगी, उतना जितना ये मीडिया में आएगा उतना उनका हौसला बढ़ेगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखें, चाहे सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, व्हाटएवर मीडिया इट इज। तो वरुण, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। आप तो डायरेक्टली उनको मोटिवेट कर ही रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और हम भी इसमें जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आपके थ्रू वो कर रहे हैं। और जी, और दूसरी बात ये है कि हाँ, हमें देखिए, ये जैसे अभी केस की हमने बात की, तो हमें इस पर नजर रखनी है, ठीक है ना। पिछली बार की तरह नहीं करना, किसी पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट नहीं करना। यप, एब्सोल्युटली। उसमें क्या होता है फिर कि व्हेन वी क्रिएट पर्सनैलिटी कल्ट वी बिकम ब्लाइंड। तो इस बार चीजों पर नजर अपनी तरफ से रखनी है और उठाना है। ये नहीं कि ये साहब कर रहे हैं तो बस वी हैव डेवलप्ड अ ह्यूज पर्सनैलिटी कल्ट, और बाद में आके पता लगा ये क्या हो गया। भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बस सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, गॉट इट। जी जी, थैंक यू सो मच। बस यही है। और इस पर आगे भी रखिएगा आप, जैसी नई इसमें अपडेट आए, और इसमें प्रेस करना है हमें बहुत स्ट्रांगली और बहुत एम्फेटिकली, तभी जाके बात बनेगी। ये भी इतना मूवमेंट हुआ है तब जाके एनसीबी ने इतना, या एजेंसी इतना काम करा है। जनता की आकांक्षाओं पर ही सरकार करती है, जो जितना जनता का प्रेशर रहेगा उतना ही करेगी। बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव करते हो, आपको
बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। जब माँ के सामने रो सकते हैं तो अपने अपने लीडर के सामने नहीं रोएंगे क्या? शोर नहीं मचाएंगे क्या? चिल्लाएंगे नहीं क्या? तो बस चिल्लाइए, शोर मचाइए, आवाज उठाइए, कुछ भी हो न्याय जस्टिस लेकर रहेंगे। बस यही कहना था मुझे। जय श्री All right. राम, हर हर महादेव। Yes, sure. Har Har Mahadev. Thank you. All right. I'm going to end with Simiji, who's back. Hanji Simiji, please go ahead. And before you hum those lines, एक बार फिर से सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं. And of course, on this beautiful day, we got this little bit of a ray of hope, कहूँगा, positive news कहूँगा. And let's keep the momentum high. Let's keep the energy high. Let's keep the the togetherness here for the family. के सुशांत की फैमिली को जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं, लेट्स कंटिन्यू डूइंग दैट. एंड ऑन दैट I will leave it with Simiji and then we'll end the session. Thank you so much. Take care. Go ahead, Simiji. अरे सिमी लगता है डिस्कनेक्ट हो गई फिर से. बहुत नेटवर्क का उनका या तो इशू चल रहा है या आई वाज होपिंग सो आई विल वेट फॉर वन मोर मिनट. बट एक बार फिर से थैंक यू एवरीवन फॉर जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आई एम नॉट गोना डू एवरी डे. छोटे छोटे और सेशंस करेंगे. आज भी सोचा था करूंगा तो छोटा ही, बट आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू टॉक एंड दैट्स व्हाट ब्रिंग्स मी बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो I'll continue to do some smaller ones, but Simiji is back, so let's see if we can hear her now. हाँ, हर हर महादेव. तो गुरु का एक छोटा सा भजन है. I'll try. It seems like it's working right now. गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो. गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो. गुरु के समान नाही दूसरा जहान में. गुरु के समान नाही दूसरा जहान में. गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो. पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को दिखावे गुरु. पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को दिखावे गुरु. ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुर्य पद ज्ञान में. ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुर्य पद ज्ञान में. गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो. यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा. यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा. ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, आवे तेरे ध्यान में. ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, आवे तेरे ध्यान में. गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो. छल कपट त्याग दीजे, गुरु जी की सेवा कीजिए. छल कपट त्याग दीजिए. Okay, looks like again some network issue. So I think we'll end it here. Thank you once again, everyone. Thank you everyone for being here. आप लोग बहुत messages भेजते हैं and I really appreciate all of that. हाँ जी सिमी जी, it looks like बहुत network issue है. You're mute. We can't hear you. Okay, Simiji, we cannot hear you. All right. Doesn't look like Simiji, आपकी आवाज आ रही है हमें, and you're having a lot of issues. So thank you for the bhajan and thank you for bringing that positivity as well. So I'm going to end this session since you're not able to hear Simiji, and we'll do it again. And thank you everyone once again for rooting for Sushant and for all the support and love. I'll
be around. Once in a while I'll come, and when we need to talk, we will talk. And we will bring some guests as well very soon, and we'll start some sessions. But till then, let's keep the positivity and let's keep the momentum. We'll very soon be doing another back to basics, based on when I have more information around for certain things. Till then, take care, God bless, stay healthy, stay happy, and जितनी prayers कर सकते हैं, जितनी prayers कर सकते हैं, please do as much prayers as possible, because these prayers will definitely get Sushant the justice that he deserves. Jai Hind, Jai Bharat. I will see you guys very soon. Thank you so much. Bye bye.